ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुर्भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते शिवानंदाय ओम नमो भगवते सत्यानंदाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम सं नो मित्रं सं नो अरुणः सं नो भवत्वर्यमा सं नो इन्द्रो बृहस्पतिः सं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति। भवसागर तारन कारण हे रविनंदन बंधन खंडन हे शरणागत किंकर भीत मने गुरुदेव दया कर दीन जने। हृदि कंदर तामस भास्कर हे तुम विष्णु प्रजापति शंकर हे। पर ब्रह्म परात्पर वेद बने गुरुदेव दया कर दीन जने। मन वारण कारण अंकुश है नर त्राण करे हरि चाक्षुष है। गुणगान परायण देव गणे गुरुदेव दया कर दीन जने। कुल कुंडलिनी तुम भंजक है हृदय ग्रंथि विदारण कारण है। महिमा तव गोचर शुद्ध मने गुरुदेव दया कर दीन जने। अभिमान प्रभाव विमर्दक है अति दीन जने तुम रक्षक है। मन कंपित वंचित भक्ति धने गुरुदेव दया कर दीन जने। रिपुसूदन मंगल नायक है सुख शांति वरा भयदायक है। प्रयताप हरे तव नाम गुणे गुरुदेव दया कर दीन जने। तव नाम सदा सुख साधक है पतिता धम मानव पावक है। मन चंचल रात्रि दिने गुरुदेव दया कर दीन जने। जय सद्गुरु ईश्वर प्रापक है भवरोग विकार विनाशक है। मन लीन रहे तव श्री चरणे गुरुदेव दया कर दीन जने। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओम गुरुदेव विद्या प्रबंध तन्नो गुरु प्रचोदयात्। गुरुदेव मेरे जब पास खड़े मैं आस करूँ किसकी। जब बाह गए गुरुदेव मिले तब बाह गओ किसकी।
जब नाथ मेरे दिलदार मिले, मैं खोज करूँ किसकी किसकी। जब रूप अनूप छटाऊ नखी, तब प्रीति कहूँ किसकी किसकी। जब दास होए शरणे उनकी, फिर शरण चहु किसकी किसकी। जब चरण शरण गुरुदेव मिले, फिर शरण चहु किसकी किसकी। गुरुदेव मेरे सत्यानंद की जय, गुरुदेव मेरे सत्यानंद की जय। गुरु गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। हे नाम तेरे दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहात काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाते यही नाम तरनाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सकेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुलोच रोय। जाते यही साध सदा तुम्हारे, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सकेति। नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारे, कलंत्र सानव मतारे। कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सकेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों कर क्या रवे। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सकेति। सच्चा सखा है हरि हमारे, माता पिता शील सुबंधु पार। भूलो न भाई दिन रात गावो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। ओम। तुमसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। एक तुझको हम ना पाया, जो कुछ है सो तू है। सबके मकान दिल का मकीन तू, कौन सा दिल में जिसमें नहीं तू। हर एक दिल में तू ही समाया, जो कुछ है सो तू ही है। क्या मलाया क्या क्रिस्तान, क्या हिंदू क्या मुसलमान। जैसा चाहा सबको बनाया, जो कुछ है सो तू ही है। अर्श से लेकर फर्श दमी तक, और जमी से अर्श भरी तक। जहाँ भी देखा तू ही नजर आया, जो कुछ है सो तू ही है। सोचा समझा देखा भाला, तुझे जैसा कोई नजर न आया। अभय समझ में साधु के आया, जो कुछ है सो तू ही है। जो कुछ है सो तू ही है। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत, जीवन दो दिन का। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में, जीवन दो दिन का। पाप कपट कर माया जोड़, गर्व के आधन का। सभी छोड़ कर चला मुसाफिर, वास हुए बन का। जगत में जीवन दो दिन का। सुंदर काया देख लुभाया, लाड करे तन का। सूडी सास बिखर गई रे, जो माला मन का। जगत में जीवन दो दिन का। केवल नारी लगे प्यारी, मौज करे मन का। काल बलि का लगे तमाचा, उलझाए मन का। जगत में जीवन दो दिन का। यह संसार सपन की माया, यह संसार सपन की माया। नीलापन सिर का। ब्रह्मानंद भजन कर मंदे, अलख निरंजन का। जगत में जीवन दो दिन का। जगत में जीवन दो दिन का। जिनके ही में हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया। जिनके द्वारे पर गंगा बही, फिर
प्रिय की प्रकरणिरपया न पिया जिन काम किया परमार्ग का तीन हाथ से दान दिया न जिया जिनके घर एक सपूत भयो 3 लाख भयान भयान भय तीन माता पिता की सेवा करी 3 तीरथ व्रत कान कया तुलसीदास विचार कहे कपटी को मीत किया न किया। शिवोऽहं 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 वही आत्मा सच्चिदानंदमय हो अमरात्मा सच्चिदानंदमय हो अखिल विश्व का जो परमात्मा है सभी प्राणियों का वही आत्मा है वही आत्मा सच्चिदानंदमय हो अमरात्मा सच्चिदानंदमय हो अमरात्मा है मरणशील काया सभी प्राणियों के जो भीतर समाया वही आत्मा सच्चिदानंदमय हो अमरात्मा सच्चिदानंदमय हो जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे बुझावे न पानी न मृत्यु मिटावे वही आत्मा सच्चिदानंदमय हो अमरात्मा सच्चिदानंदमय हो जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे बुझावे न पानी न मृत्यु मिटावे वही आत्मा सच्चिदानंदमय हो अमरात्मा सच्चिदानंदमय हो है तारों सितारों में आलोक जिसका है चंदा व सूरज में आभास जिसका वही आत्मा सच्चिदानंदमय हो अमरात्मा सच्चिदानंदमय हो जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका वही आत्मा सच्चिदानंदमय हो अमरात्मा सच्चिदानंदमय हो अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया वही आत्मा सच्चिदानंदमय हो शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। परमहंस गुरु पुण्य काम तुम लो प्रणाम सत कोटि हृदय का तिमिरा पंथ के ज्ञान चक्षु तुम जड़ता में चैतन्य उर्मि तुम तेरे करुणा से भोगा मन निसदिन गाता ज्ञान अभय का परमहंस गुरु पुण्य काम तुम ज्ञान गगन के केंद्र इंदु तुम ज्ञान ध्यान चक्र के मध्य बिंदु तुम बिंदु हमें हम स्नेह सुंदर तुम अंत नहीं तेरे परिचय का परमहंस गुरु पुण्य काम तुम लो प्रणाम सत कोटि हृदय का तू ही गीता तू ही रामायण व्यास तुम्ही तू वैशेपान तू ही शिवम तू ही सत्यम शांति वेक महंतम तू परमहंस गुरु पुण्य काम तुम लो प्रणाम सत कोटि हृदय का भजले सीताराम मनवा
भजले सीताराम भजले सीताराम मनवा भजले सीताराम दिवस दिया जो हरि गुण गाले गुरु दिया जो नाम माता पिता ने जन्म दिया है रूप दिया भगवान भजले सीताराम मनवा भजले सीताराम राम प्रभु है अंतर्यामी सकल खबर वे लेते जिसने जैसा कर्म किया है वैसा फल प्रभु देते लड़का जन्मा पाला पोसा जिसको दूध पिलाया वही लड़का मरे पिता के मुख में आग लगाया एक नर भूला दो नर भूले भूले सब संसार जान भोज कर जो नर भूलो वो सो नाही पार स्वामी जी ने योग ज्ञान से स्वामी जी ने योग ज्ञान देश देश फैलाया इस योग से सब लोगों ने शांति और सुख पाया भजले सीताराम मनवा भजले सीताराम मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों यह विनती है पल 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 छिन हो ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों या वैरी कुछ संसार बने या मोत गरे का हार बने या जीवन मुझको भार बने हो ध्यान तुम्हारे चरणों में संकट ने मुझको घेरा हो या चारों ओर अंधेरा हो परम गण डगमग मेरा हो ध्यान तुम्हारे चरणों में अग्नि में मुझको चलना हो कांटों पे मुझको चलना हो या देश त्याग ही करना हो ध्यान तुम्हारे चरणों में युवा पर तेरा नाम रहे तू याद सुबह और शाम रहे तेरे याद में आठों राम रहे हो ध्यान तुम्हारे चरणों में हो ध्यान तुम्हारे चरणों में नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सरचंद्रताय नंदी सप्रमात महेश्वराय मंदार फूसचाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वृंदावत सूर्याय श्रीकंठाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय एक सत्स्वरूपा जटार पिनाकस्ताय देवदत्तगंतस्मै स्वस्ति प्रदाप परिपालयन्तं नागेन्द्र मार्गेण महिमहेशा गोब्राह्मणभ्य सुमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु नमस्ते मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च स्तोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न वे भूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोंश न वे प्राणसंज्ञा न वे पंचवायु न वा सप्तधातु न वा पंचोक चिदानन्दरूपः शिवोंश न मे रागदेशी न मे लोभमोह मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूपः शिवंश न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्था न यदैगा अहं भोजन भुक्ता चिदानन्दरूपः स न मृत्यु न शङ्का न मे जाति वेद पिता नैव मे न माता न च न बन्धु न गुरु नैव चिदानन्दरूपः अहं निरकार चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अधरं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वसनं मधुरं चरितं मधुरं वचतं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं सुप्तं मधुरं चरितं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं चरिणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गंगा मधुरा माला मधुरा यमुनार्मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा राधा मधुरा दुष्टं मधुरं शिष्टं मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा एष्टिर्मधुरा सुष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं ओम दक्षिणाविदेतानां तन्नो प्रचोदयात् ब्रह्म मुरारिसुराचितलिंगं निर्मलभासितशोभितलिंगं जन्मज दुःखविनाशनलिंगं तत्त्वप्रणामि सदा शिवलिंगं देवमुनिप्रवराचिलिंगं कामकानकरुणाकरलिंगं रावणदर्पविनाशनलिंगं तत्त्वप्रणामि सदा शिवलिंगं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिंगं बुद्धिविवर्धनकारणलिंगं सिद्धसुरासुरवन्दितलिंगं तत्त्वप्रणामि सदा शिवलिंगं कनकमहामणिभूषितलिंगं फणिपतिवेष्टितशोभितलिंगं दक्षसुयज्ञविनाशललिंगं तत्त्वप्रणामि सदा शिवलिंगं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिंगं पङ्कजहारसुभूत सञ्चितपापविनाशनलिंगं तत्त्वप्रणामि सदा शिवलिंगं देवगणार्चितसेवितलिंगं भावैर्भक्तिभिरेवितलिंगं दिनकरकोटिप्रभाकरलिंगं तत्त्वप्रणामि सदा शिवलिंगं अष्टदुरोपरिवेष्टितलिंगं सर्वसमुदकारणलिंगम् अष्टदरिद्रविनाशनलिंगं तत्त्वप्रणामि सदा शिवलिंगं सुरगुरुसुरवरपूजितलिंगं सुरतुर्पुरुष सदा शिवलिंगं परात्परं परमात्मिकलिंगं तत्त्वप्रणामि सदा शिवलिंगं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारं मेघवर्णं सा लक्ष्मीकान्तं वन्दे विष्णुं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नियन्ति ध्यायन्ति नकामोक्षोकारनमा नमन्ति स्वदेव नमन्ति सार्गनरा नमन्ति देवस्तकरा महादेव महात्मा महादानं पर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरं एनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः सावरजं व्याप्तं यत्किञ्चित् चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे चिन्मय व्याप्तं सर्वं त्रैलोक्यं चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः सरस्वती रत्न विजातत वेदांत सूर्या गुरुवे नमः चैतन्य शास्त्रं शान्तं ओमातीतं निरञ्जन विधुनाथ कलातीत तस्मै श्रीगुरुवे नमः ज्ञानशक्ति समारूढ़ तत्त्वमालावित मुक्ति अनेक जन्म समाप्त सर्वबंध विदायिन आत्मज्ञान प्रदायन तस्मै श्रीगुरुवे नमः शोषणं तत् ज्ञानं ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रं ओम भूर्भुवस्सुः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम
ओम शिव परात् परम सिंह ओंकारा शिव तम शरणम। ओम शिव परात् परम सिंह ओंकारा शिव तम शरणम। नमामि शंकर भवानी शंकर, नमामि शंकर भवामि शंकर। उमा महेशव तव शरणम। नाचे भोलेनाथ, नाचे भोलेनाथ। ओम धिमिक धिमिक धिम धिमिक धिमिक धिम। नाचे भोलेनाथ, नाचे भोलेनाथ। मृदंग बोले शिव शिव शंभो, डमरू बोले हर हर हर। वीणा बोले हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि। बम 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 महादेवा, हर 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 सदा शिवा। बम 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 महादेवा, हर 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 सदा शिवा। बम 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 भोले, रामचरितमानस बोले। सीताराम बोलो सीताराम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम। हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शंभो मुरारी शंकर मुरारी, शंभो मुरारी शंकर मुरारी। फणिधर शंकर मुरारी। शिव हर हर बम भोला, आज चढ़ेगा भांग का गोला। शिव शंकर बीजा वरदानी, शिव जटा संग विजयंतारी। ओम हर 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 बम 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 बम। हर हर बम बम महादेवा, हर 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 बम भोले, बम भोले बम भोले। हो यमुना तीर विहारी, गोवर्धन गिरधारी। गोपाल कृष्ण मुरारी, गोपाल कृष्ण मुरारी। जय जय राधे जय नंदन, जय जय गोपी जन मनोरंजन। दुष्ट निकंदन श्याम श्याम, जन मनोरंजन श्याम श्याम। दशरथ नंदन राम राम, दशमुख मर्दन श्याम। नंद के लाल जय गोपाल, यशोदा के लाल जय गोता। राधा बिहारी जय गोपाल, राधा मनोहर जय गोपाल। नंद के लाल जय गोपाल, जय गोपाल जय गोपाल। कुंडलिनी कुंडलिनी जागो माँ कुंडलिनी 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 जागो। जागो माँ जागो माँ जागो माँ जागो माँ। कुंडलिनी 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 जागो माँ। जय जय माँ जय 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 माँ, जय काली है दुर्गे माँ। जय जय माँ जय अम्बे माँ, जय जय माँ जय सरस्वती माँ। In India, there is celebration going on, Mahakumbh Mela. Mahakumbh Mela is celebration of millions Naga Baba. Naga means they don't use any clothes and they take a bath in Prayagraj. Prayagraj also called Allahabad. This is very inspiring. Millions and millions sadhu. Mahakumbh Mela is come every 12 years. But this year condition 140 year celebration of Mahakumbh Mela. Go and see in the TV Mahakumbh Mela 2025. It's unique. Thousands and thousands they take a bath in the Ganga.
Ganga, Yamuna, Saraswati, three rivers meet together, and this is unique thing. And they call Har Har Bole, Har Har Mahadev, Har Mahadev. It's something unique. I was watching all the time this one, and I was praying to the Lord Shiva. Ganga, Jamuna, Saraswati, Triveni Sangam called three rivers together. Ida, Pingala, Krishna, Ganga, Jamuna, Saraswati. So this one very important festival. Month of February 7, 8, 9, we are going to celebrate spiritual retreat, bliss within. That retreat will be unique union from this year. After 2 years we are now celebrate, but spiritual retreat, union with yourself, listen the inner voice of joy, voice of peace, voice of happiness. Not intellectual thinking, but transmission of the divine energy. The Lord is within, with you. Lord is everywhere. Lord is not temple. Lord don't have name. He is called Satchidanand. The Lord is pure Chit and consciousness. Within us, God. Without the God, we cannot see, we cannot listen, we cannot smell, we cannot talk. We cannot do anything. This body is a gifted, God has given it to you. Everyone has different lifetime, 50, 60, 100. I saw one Swami, he was 150 years old. His name was Sitaram Maharaj in India. He come to give the blessing to Swami Satyananda, 150 years. The body is a car, mind is a driver, and soul is the passenger. Whose God is within you, with you every moment. Without the God, we cannot do anything. And God is not only human being, animal being, by the bird. I was walking and I saw the bird, how they find out the food, the bird flying together, and was seeing the fishes. The fish, they cannot live without the water. So man cannot live without love, without ambition. If you don't have love, you're dry. River, dry river. No. Be the ocean of joy, ocean of peace, ocean of happiness. One thing, an important thing, not to fear anyone. Be cheerful, be blissful, be happy. Fear, anger, worry, preoccupation, these are enemy. Enemy is outside. And someone respect you and disrespect you. Always say, thank you. Word you, dhanyavad, shukriya. Shukriya. Give thank you everyone. Because God has given us, sent you with a purpose. Now, mother and daughter, they are sitting. The next mother sitting and her daughter. When she born, she was a little baby. She was just crying and mother touching her chest and giving the milk. And now that little girl become 26, 27 years old. How growing? Person is growing, but we don't know how to growing. That's the miracle of the God. God, he give different name we give. Rama, Krishna, Brahma, Vishnu, Sadashiva, Shiva. The God, G-O-D. D-O-G, dog, and G-O-D, God. God and dog reverse the same thing. Human being, a blessed one. Enjoy life, peaceful, joyful, happy. Don't hurt no one. Someone dislike you, you say thank you. You change your quality of mind, quality of thinking, quality of eating, quality of walking, talking. Every action you be perfect by yourself. Don't speak the hard word to no one. Learn always forget and forgive. There's some quality which you have to learn by yourself. The teacher can talk and talk and talk giving, but you are the master of yourself. You are the architect of your destiny. You can change your life, change life of that person. I became a Swami. Swami and Sannyasi. Swami who is master himself. Sannyasi who don't possess anything. I make a many ashram, thousands of disciple person throughout the more than 60 country travel, and I feel very blessed because I have given
Believe or not, I never heard in my life no one. Word and action, I never. I give. And I like to give. Swami Satyananda, my guru, his guru is Swami Shivananda. Shivananda, he was a doctor. Swami Shivananda is a doctor. And he was helping poor people. He went to Malaysia and come back, and he tried to help poor people, sick people, weak people, helping. And finally, one day when he was helping poor people, curing their disease, I said, who is God? Where is God? And one day he was meditating. Suddenly someone appeared in front of me and gave his mantra. And he said, now stop business as a doctor. Be a sannyasi. You are Swami now. And he tried to spreading the word, Satyam Shivam Sundaram. His teaching was Satyam. Every word you see is a truth. Learn to give respect, take respect. Be good, be humble, be simple. Teaching of Swami Shivananda is very powerful, very simple. He is a very humble person. I have not met physically, but I make through Swami Satyananda. And Shivananda teaching is very powerful. Satyananda teaching powerful. Swami Satyananda, I live whole life with him. And then he sent me to my mission in western part. 49 years I will be in this part of the world traveling and spreading the teaching and transmission of the Swami Satyananda, teaching humble and simple way. So I change quality of my life changing because Guru transmit me. His Guru transmit you. And that's why we are here to come to hear the be good and do good. Not to fear anything, not to angry to no one, not to worry anything. Fear, anger, worry, that is your enemy. Kill your enemy. Be humble, be joyful, be peaceful, and let your life become a beautiful garden. When you enter the garden, you see the bird flying in the tree and flower and the lake, nature, wind, and you'll be happy. Let your life become a wonderful garden. Sing the song which no one sing. Bring the thought no one thought. Do the thing no one do. Do yourself. Follow your inner voice of joy. God speaks through you. He talks with you. He is always with you. Not a single second God. You don't have to go anywhere, any temple, anywhere. God always with you. He is within you. It's called Atma and Paramatma. Atma, individual soul, Paramatma, all put everywhere. So, look at God, listen His voice, and be cheerful, be happy. One art of smiling, always smile. Smiling is the art. Your face should be always smiling, and compassion, courage, willpower, tranquility, calmness. Develop the good quality within you, and your life doesn't matter who you are. You're small or big. God created religion? No. Man created religion. But one religion we call Sanatana Dharma. Sanatana means there's no end and no. So, if you have chance, go to the TV and write the word Mahakumbha Mela, Triveni Sangam in Allahabad, Prayagraj, and you understand how the Swami they live. They call Naga Baba. Naga Baba means naked sadhu. They don't use any clothes. They don't know where the Naga come and where they go. They live in Himalayas. They don't beg anything. And I was listening, the Naga, they dissolve this body. They burn this body and they start new life. Sometimes difficult to believe. But Naga means no clothes. We born without clothes. We go without clothes. Nothing belongs to us. This world, we use anything. Doesn't matter how much big house, big car, big property, big name. But one day when you live, you don't take anything. So live right now. Be happy. Every day, take 1 hour, 5 hour meditation.
Contemplation, every hour take 5 minutes for yourself and ask yourself, who is within me? Who is with me? If God is with me, yes, God is with me. Then your life will be beautiful, blessing. So many people doing harm, no one. They don't harm, they harm by themselves. Many people angry, you don't anger others, you kill your peace by yourself. Anger and worry kill your peace. My dear friend, change the quality of life. The three kind of thought current we call, three kind of action. Action, word, thought and deed. When word come, we by action and thinking and we call this life is a blessing. Utilize your life. The three stages of life, we become small, teenager and old. Once you become old, you cannot be a little children. So, live right now. Forget past. You cannot bring back the past. You don't know future. Future depends upon what you go to. Whatever we are in this life, that past life what you have done, good karma. I am Swami, not because I want to Swami, that is my past life, prarabdha, that's why I am here. And what I do this life, my next life depends upon. So, my dear friend, today is a very special day. I invited you for the retreat. And retreat will be powerful transmission of the love and affection. Love is not say I love you, and again something happened, I hate you. Love follow hate. Day follow night, night follow day. But try to live in the state with harmony, joyful, contentment and satisfaction, and let the life become a divine cosmic blessing. Now I have next to you Mr. Hariom. Oh, Hariom is walking, he went to vacation. But I have one person, Yamuna Devi, and I want to say hello to her. 1 minute only come and say something hello to them people. There are thousands of people making this program invisible. Hari Om. Hari Om, thank you for being here today. Thank you, Swamiji. Thank you. For everything that you do. Now, I know mother and daughter. Who is mother and who is daughter? Now, mother become daughter, daughter become mother. Amber, we call Amrit, she is a nectar. And I want she should tell something about her life, how you start a spiritual life, and what make you to be a beautiful daughter. Daughter and the mother, mother and daughter. So What do you mean, Swami? Do you mean how I started coming when I came back here, or my whole life? Whole life. Oh God. I was born at a very young age, Swamiji, and to wonderful parents and a very lovely but interesting brother at times, and in this beautiful sunny state. And I don't know, just I'm very grateful and blessed to be born into the life that I was born into, because I know that even on the worst days, many people have it worse than me. So to always be grateful, even on the days that are hard. When I saw you for sure, I thought you are the nectar. And nectar everyone like. That's why I give his name Amrit. Amrit is nectar. You are really Amrit. Everyone like you. You are a very pure soul. Within you there is something living with that divine soul within you. Now next to your mother. Your mother is a very special soul. She likes to give, and she living for other people. So talk few words, and then we're going to finish this one program. I'm very grateful, Swamiji, to have you in our lives. I think that our lives would have been completely different if we wouldn't have never met you.
you are not just our guru and teacher, you are an integral part of this family. Uh, Everything we have spiritually become your part, an integral part of it. You have inspired us. You inspired us also in any moment, you know, of doubt or confusion. And you know, I always tell people it's good to have a spiritual teacher for a family because it gives you that additional, you know, inspiration. And it's not just spiritual, it's also even, I will say, more organic in the sense of yamas and niyamas, being good as a family, being good to each other. And so, thank you so much for everything. Thank you, gracias. I am the river, you are the sea. Let your love and flow right through me. I am the river, you are the ocean. Come and fill with sweet devotion. I am the bird, you are the sky. Let your grace flow as I fly. I am the earth, you are the sun. I am many, you are one. I am the darkness, you are the light. Send your wisdom into my light. I am the river, you are the ocean. I am the river, you are the ocean. I am the fruit, you are the sweet. I am the sweet, you are the ocean. In the water, fire, air, ether is Ra. In the heart, mind, prawn, and sense is Ram. In the breath, blood, nerves, and brain is Ram. In sentiment, thought, word, action is Ram. Within is Ram, without is Ram. In front of is Ram. Above is Ram, below is Ram. Behind is Ram. To the right is Ram, to the left is Ram. Ram, Ram, Ram. Everywhere is Ram, 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 Ram. Ultimate goal of one and all is Ram, attained through the Shraddha, Prem and worship in the I am the Ram, 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 Ram. Hari Om, Namah Shivaya. Hari Om, Hari Om, have no home, Hari Om, have no home, Hari Om, have many home, Hari Om, 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 Hari Om. Take my life and let it be constant, it will out to thee. Take my hands and let them move as the impulse by love. Take my moments and my day, let them flow, easily pray. Take my feet and let them be swift and beautiful for thee. Take my voice and let them eat, always only for my King. Take my lips and let them be filled with message for thee. Take my silver and my gold, not thirsty. Take my intellect and may use every power thirsty. I am the river, you are the ocean, you are the ocean, you are the ocean. Om Samno Mitra Sam Samno Varunah Samno Bhavatvaryama Samno Indro Brahaspati Samno Vishnu Rukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vidasami Ritam Vadisami Satyam Vadisami Tanmavotu Tadvaktarmotu Avtu Mamotu Aktaramo Om Tvameva Mata Sapita Tvameva Tvameva Bandhu Cha Sakha Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Dev Om Asato Ma Sadagamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityor Ma Amritam Gamaya Sarvesham Swastirbhavatu Shantirbhavatu Purnam Bhavatu Mangalam Bhavatu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Trayambakam Yamaya Sugandhim Pushtivardhanam Urvarugam Mrityor Muksham Om Naham Karta Hari Karta Hari Karta Naham Karta Gurudev Karta Gurudev Karta Om Satyam Saranam Gacchami Yogam Saranam Gacchami Sangam Saranam Gacchami Om Tvameva Mata Cha Pita Tvameva Tvameva Bandhu Cha Sakha Tvameva Tvameva Vidya Drivnam Tvameva Tvameva Sarvamudaya Om Satyam Saranam Gacchami Yogam Saranam Gacchami
Buddham Saranam Gacchami. Om Shanti. Hari Om Tatsat, Hari Om. Thank you. I pray for everyone, and we will see in the spiritual retreat. I know we have millions of people today, they come millions and millions of people. They are invisible form, they are not physically. But today the mother and daughter come, whole universe is there. Hari Om. So thank you. Love and blessing. Hari Om. Thank you. Hari Om. Hari Om.